Okay, so good morning all of you. Okay, so today we will discuss about the chapter properties of. Okay, so B.Ed Entrance Exam, this is also an important chapter. Through both conceptual, both fundamental question pachare, basic it pachare, because integral it is calculative base. So fundamental question pachare. So jaha jaha bhi questions हम आज ही discuss करिवा detail. Okay. So all those questions definitely you will get a chapter total दीटा की तीनटा question आसे maximum तीनटा question आसे exam रे what I have seen. ठीक है, तो जहाँ भी हम डिस्कस करिवा इथरे गोटे दीटा पड़ जिवो. ठीक है, at least I can assure you out of 3 questions maximum जदि तीनटा question पचारला 1 is confirm. ठीक है, understood. तो जहाँ भी हम सेशन से आगुरी कले सब जगह जड़े देखीदेव यूट्यूब रे सब वीडियो जब फिजिक्स देखीदेव वाणिक स्मार्ट क्लास रे जहाँ जहाँ डिस्कस कर डेफिनेटली टोटल आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस. ठीक है, यू विल बी एबल टू आंसर 8-10 क्वेश्चंस आराम से भितर पड़े आसो. बाकी फुल सिलेबस कवरेज आम रेगुलर क्लासरूम क्लास होची वी कैन अश्योर यू एटलिस्ट 35 आउट ऑफ 40 you will be able to solve. जहाँ पढ़े थे गोटे कि दुटा क्वेश्चन छाड़ देले 37-38 क्वेश्चंस आसे क्लास नोट्स रो जहाँ भी क्लास रे मो पढ़ाए तो 37-38 क्वेश्चंस यू विल गेट. सेठो 3-4टा माइनस कर दूँ धरतु जब मन पड़लानी न कर पारे भी समवेयर बिटवीन 32 to 35 इज मैंडेटरी इजिली यू कैन डू. ठीक अच्छे. सो देखो द SI यूनिट ऑफ प्रेशर. ओके, सो प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स. ठीक है, पर यूनिट एरिया. ठीक है, सो SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, कहीं SI यूनिट इज न्यूटन एरिया रहला मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आम कौन कहूँ वी कॉल इट एज और इट इज कॉल्ड एज पास्कल. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज Pascal. Now force रो CGS यूनिट है डाइन. ठीक अच्छे, एंड वी आर राइटिंग प्रेशर रो CGS यूनिट हो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. किंतु क्वेश्चन पचे सिस्टम इंटरनेशनल बाय SI यूनिट कौन इट इज पास्कल. ठीक अच्छे. सो प्रेशर विषय रे किछि इंपोर्टेंट सिलेबस एक्सक्लूसिवली लिखाई प्रेशर. ये भाया माइंडसेट रुहतन जे प्रेशर लिखाई केवल प्रेशर पचार ना से प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी पचार. ठीक है, डेंसिटी कौन विस्कोसिटी कौन सब भी पचार. तो आम सब डिस्कस करवा आगे धीरे धीरे. सो प्रेशर जिते कहते एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज 1.013 10 to the power 5 पास्कल्स. ठीक है, 1.013 10 to the power 5 पास्कल्स ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, केमती मेजर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर. बैरोमीटर में मेजर करें देखो ये है हमारा बैरोमीटर. दिस इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी. दिस इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी. सो आम गोटे ट्यूब नेले एमती. ठीक अच्छे, टेस्ट ट्यूब भाया या भितर एमती इनसर्ट कर पूरा बुड़े रखा हेल्ले या भितर एयर डिस्प्लेस हम मर्क्यूरी भितर पड़ेगा. देन वी विल इन्वर्ट दिस. ताको जो इन्वर्ट करवा कौन हम मर्क्यूरी किसी हाइट जमी राइज हो कहीं रहा हाइट जहाँ रहा भितर तो किसी एयर नहीं. सो दिस इज वैक्यूम भितर वैक्यूम. सो सरफेस उपर से पॉइंट ए नेली मुझे पॉइंट बी पॉइंट सी. सो ऑल दिस 3 points आर ऑन द सेम लाइन. जेहेतु ऑल दिस पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन दैट इज वाई इज प्रेशर एट बी प्रेशर एट सी. ठीक है, बिकॉज P इज इक्वल टू H रो G मीन्स प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेल ड्यू टू ग्रेविटी. आगो क्वेश्चन डिस्कस कर. तो से लेवल मन रखो प्रेशर सेम हाइट सेम प्रेशर. दैट इज वाई या ऊपर ये तो एक्सपोज हो पूरा एटमॉस्फेयर को. तो या ऊपर कौन एक्ट कर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ये जी प्रेशर प्रेशर तो यही प्रेशर बोले आमको ये हाइट मिले. ठीक है, कितनी हाइट मिले. ठीक है, दैट इज वाई वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मीन 76 सेंटीमीटर हाइट उठिला जदि वी कॉल इट एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और अच्छा जब आप वाटर कॉलम रे मेजर करिवा देखो 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम. सो देखो जब 10.3 कहीं मर्क्यूरी नौ जब मुझे जगह वाटर नेबी 76 सेंटीमीटर जगह पानी केते हाइट उठिबो 10.3 मीटर. सो 10.3 मीटर हाइट जाए जब वाटर लेवल जाऊँचे सो दैट मीन्स केते लंबा मत दरकार हम. ठीक अच्छे,
So first reason. Second thing kahi kemti hochi mercury density is greater than that of the density of water. ठीक अच्छे. So 13.6 into 10 to the power 3 ठीक अच्छे kg per meter cube. This is the density of mercury. Density of mercury. Water is 1000 kg per meter cube. ठीक है. This is for water. So देखो तो mercury density is 13.6 times more than that of water. Okay, ठीक है. So that is why this is that is why we are using mercury. Second point. Third point होची कोना water is colorless, so reading it will be very difficult. Okay, but if you see mercury is red in color, you can easily identify the position of the mercury. So that is why we are using mercury in barometer. ठीक है. I hope this is clear. Okay, now SI unit is here, right answer is Pascal. ठीक है. ये था bar is another unit to measure pressure. So 1 bar is 1.013 10 to the power 5 pascals. ठीक है. Okay, and this is CGS unit. ठीक है. Okay, and normal force, why we are calling it as normal force? खाली force per unit area जो लिखंदी pressure, is it correct? No, it is incorrect. भूल लीजिए. Pressure is always normal force upon unit area. Means this is the surface. ठीक है. Pressure is acting like this, so perpendicular and this. ठीक है. So याको कहीं perpendicular देखो pressure tangentially act horizontal नहीं कि पूरा vertical नहीं. So यार दीटा component क्या को visually. ठीक है. So this is vertical, so this is say sorry, this is around the force. Okay. So force इठी पूरा vertical नहीं कि पूरा horizontal नहीं, तो force इठी tangentially act करची some angle. तो सेट में बोलूँ मैं आपको नेली Fy component, this is Fx component. So which component is responsible for pressure? It is Fy. So pressure will be written as Fy by पूरा area. धरंतु यार पूरा area है ला A. So it is Fy by A. Okay. I think this is clear to all of you. Fx ପାଇଁ ताला कौन हबो? Fx पे जो action आसे ताको कहते shear stress produce हबो. ठीक अछि. This is a shear force. ठीक है. So Fx कौन करछि? Fx is trying to change the shape of the body. ठीक अछि. केतबेले mechanics of solids हम डिस्कस करिवा जतबेले जति नेक्स्ट क्लास रे देन मु से सब जिंस बुझेबी. ठीक अछि. Understood. So here we are considering pressure. Okay, I hope it is clear. Gote revision check of view revision check ru सब जिंस मु डिस्कस कर देली in short. Then देखंतु pressure at a point inside a liquid depends on. ठीक अछि. देखिबा. So देखंतु pressure विषय आउ किछि डिस्कस करिवा. Pressure हम तो डिस्कस करचंती धर को atmospheric pressure नेली. So any pressure which is greater than 1 bar, but atmospheric pressure is called as gauge pressure. Okay, is called as gauge pressure, and any pressure which is below atmospheric pressure is called as vacuum pressure. ठीक है, is called as vacuum pressure. धरंतु 1 bar रो मु x height उपरु गली and एठी x height तळु को आसेली. ठीक अछि. ताहाले मु कोन परिबे नहीं राइट, this is as plus, this is minus x. ताहाले नहीं राइट here that P gauge, okay, P gauge is equal to, ठीक है, by P gauge is equal to minus of P vacuum, minus of P vacuum. कहीं ये हला x या वैल्यू कितने minus x. So magnitude wise both are same. बड़ ऊपर तल डायरेक्शन वैल्यू मु देखेली minus x. But you see एठी 1 bar ऊपर say this is 1.5 bar. So 1.5 bar जो गला pressure above atmospheric pressure is called gauge pressure. जदि 1 bar तळु का से 0.8 bar जदि होची, then this 0.8 bar is called as what? Vacuum pressure. Okay, 0.8 bar is called as vacuum pressure. ठीक है. कहेंगे any pressure less than atmospheric pressure is called vacuum pressure. Or this can be written as दी पट में negative sign multiply कर देले I can write P vacuum is equal to minus P gauge. Okay, P vacuum is equal to P gauge. Understood? ठीक है. सो ये गोटे प्रेशर आम जानी पारे जे कौन कौन को टाइप ऑफ प्रेशर. आ गोटे प्रेशर देखो गोटे मिलला गोटे पड़ला गेज प्रेशर, गोटे पड़ला वैक्यूम प्रेशर. आ गोटे देखो एब्सोल्यूट प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर होची कौन? दिस इज द गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट प्रेशर. ठीक है. सो वर्तमान देखो प्रेशर पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन. सो मु गोटे एमती कंटेनर नेली. ओके, ओनली फंडामेंटल देखिए. ठीक है. सो ये लिक्विड रहा. ओके, सो ये लिक्विड भीतर गोटे सरफेस रहा ये एंड एच हाइट जाए लिक्विड अच्छे. ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये देखा गले इफ यू सी
या ऊपर ए एच साइड जो अच्छी या ऊपर किसी लिक्विड ना नहीं या ऊपर लिक्विड तो अच्छे सो ए लिक्विड रो वेट ए लिक्विड रो वेट मींस m into g ए सरफेस ए ऊपर एक्ट करिवो ना नहीं ए सरफेस ए ऊपर एक्ट करिवो डेफिनेटली ता ऊपर एक्ट करूचे ओके एंड प्रेशर होची कोन फंडामेंटल देखिले नॉर्मल फोर्स अपॉन यूनिट एरिया तो ये नॉर्मल फोर्स होची m ओके m into g इज द नॉर्मल फोर्स ठीक है सो मास ऑफ वाटर m into g by a so this rho into mass density into volume into g by a so this is rho into देखंतु वॉल्यूम को केमती लिखि हबो ए जो एरिया केते वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऊपर अछि दिस एरिया इनटू हाइट h ओके दिस इज a into h into g divided by a into a कटि गला so this can be written as h rho g okay this can be written as h rho g so pressure is equal to h rho g ठीक है so this is the pressure what due to liquid on the surface what is this pressure देखो this surface ऊपर atmospheric pressure एक्ट कर so जदी ए प्रेशर संगे हम atmospheric pressure को जोड़ी देबी that is the total pressure which is acting on the surface and that is nothing but equal to what absolute pressure ठीक है so that means ए प्रेशर कौन हो गला जदी atmospheric pressure में ऐड करी so 1 bar and ये जहां भी प्रेशर था ठीक है मैं ऐड कर देले I am getting absolute pressure so that means which pressure is this pressure is nothing but P gauge बुझ पारले केमिति कंपेयर करछे देखंतु P absolute is equal to H rho g ओके H rho g plus 1 bar ये atmospheric ये absolute ताले मझिटा कोन हबो का सेंस हला gauge pressure understood so this is the gauge pressure so pressure at a point it depends on what देखंतु liquid जदी धरंतु या भीतर में वाटर नैचे बा पेट्रोल केरोसिन ले एसीटोन अल्कोहल जहां भी मनली एनी लिक्विड आई एम टेकिंग ता डेंसिटी कांस्टेंट रहला g होची स्मॉल g ग्रेविटेशन चैप्टर डिस्कस that is acceleration due to gravity okay g is constant that means rho g jodi constant p is directly proportional to h so jeti ki h hochi kon depth to jette depth bodi chalibo jette depth increase hobo to kon hobo increase he chalibo so it depends on what depends on the depth of the point ठीक है shape of the container ऊपर depend करिवो ना pressure never depends on the shape of the container ठीक है it depends on the volume of liquid no does not depend on the volume depends on the depth yes area of the container no simply depends केती height जाए liquid अच्छे ठीक है so whenever जदि swimming pool रे if you dive जते bottom जते तळुग हम आम बॉडी ऊपर से अधिका प्रेशर एक्ट करिवो सिमिलरली सबमरीन गोटे पर्टिकुलर रेंज जाए ही भीतर को जाते पर्टिकुलर डेप्थ जाए सॉरी रेंज को पर्टिकुलर डेप्थ जाए ही भीतर को जाते ओके व्हाई इफ यू गो बिलो दैट सॉरी और इफ यू गो बियॉन्ड दैट और बिलो दैट देन द हाइट विल बी और द डेप्थ विल बी टू हाई ठीक है एंड द प्रेशर एक्टिंग विल बी वेरी हाई एंड सबमरीन कैनॉट बी लिफ्टेड अप सबमरीन ऊपर को आसी परिबनी अंडरस्टूड ठीक है वर्ल्ड वार टाइम रे जते बेले अमेरिकन यूएस नेवी रो नेवल शिप्स पार्क हे थिला यूएस नेवी रो बेस रे सेता बेले जापानीज सबमरीन आस्थिले टॉर्पेडो छाड़िया पई बहुत सबमरीन सेता बेले सब जानि थिले ए जिन सब बहुत सबमरीन जानि पार नथिले सेता बेले डेप्थ को पळिथिले एंड ऊपर को उठी पारलेनी एंड द सोल्जर्स डाइड इनसाइड द सबमरीन बुझ पारले अंडरस्टूड कैन सबमरीन ऊपर को आस पारलेनी ओके सो दिस इज द रीजन हाउ प्रेशर और दिस इज हाउ द प्रेशर changes with respect to depth okay so from the Pascal's law pressure applied to a confined liquid is transmitted equally in all directions ठीक है transmitted equally but undiminishedly in all directions means देखो here this is an enclosed liquid confined means enclosed what container the close एक रहिला and I am taking this is a point ठीक है so a point I am applying pressure P जदि it will transmit P in all directions ठीक है all directions transmitted equally in all directions or this is transmitted undiminishedly in all directions answer is option C next देखो the pressure in a liquid at the same depth okay pressure in a liquid at the same depth ठीक है so pressure in a liquid at the same depth कौन होगा it will be same ठीक है उदाहरण तो ये है लिक्विड सो उदाहरण तो ए पॉइंट में नेली ए पॉइंट है बी
ए पॉइंट सी ए पॉइंट है डी ठीक अच्छे सो एठी भी हाइट रहा एच हाइट एच बा डेप्थ एच डेप्थ भी एच ठीक है प्रेशर इन ए लिक्विड एट द सेम डेप्थ कौन हम P is directly proportional to H so same depth means pressure will be same okay because it is directly proportional to H so it will be same at all points different at different places now it will be different it will only change pressure will only change when there is a change in height okay ठीक है zero no pressure is not zero here infinite no not infinite ठीक है okay which instrument is used to measure atmospheric pressure we have just discussed that is barometer ठीक है so barometer is the device that is used to measure atmospheric pressure okay ठीक है so manometer here to measure the pressure co pressure of a fluid in a pipe देखो manometer दी प्रकार what is simple YouTube manometer what is simple YouTube manometer आ गोटे differential manometer ठीक है so this is a YouTube I am taking YouTube like this so here we are having liquid ठीक है so this side is connected to a pipe okay this side is connected to a pipe so ए प्रेशर मेजर करे पे चाहूँ ए तो ये जी प्रेशर रहा पाइप भितर धरतु फ्लूइड लिक्विड फ्लो करची जी रहा सेम प्रेशर ये भी रही दिस इज ए प्राइम ओके सो ये पाइप रू कौन देखु धरतु ये गोटे पाइप है लेंथ मुझे क्रॉस सेक्शन देखुँ आई एम लुकिंग एट दिस क्रॉस सेक्शन सो पाइप एमती अच्छी या लेंथटा बोर्ड भितर अच्छी भावतु ठीक अच्छे सो हियर इट इज ए डैश तो ये लिक्विड आसो या पुश कर मर्क्यूरी पर प्रेशर देले मर्क्यूरी ये हाइट रेज है से टू एक्स हाइट मर्क्यूरी गला ठीक अच्छे यू है एच ए हाइट भी होते एच धरतु दिस हाइट इज एच ताले कौन एपटू हाउ कैन आई मेजर प्रेशर एटमोस्फेयर प्रेशर कर जिते गोटे हाइट को गला मर्क्यूरी लेवल स्टेबल हो this is called YouTube manometer this is left limb this is right limb so P at A so pressure at A it रहला PA plus this is density of water it तो water अच्छे ना so rho into G into H1 plus it देखो mercury रहला so rho of mercury into G into H ठीक है then ऊपर को जाऊ जाते this is minus so this is rho into G ठीक है into G then ऊपर गला so this is H and then ऊपर को जाते what I can write down I can write here again minus ऊपर कौन जाइए mercury so rho into G okay so into small g into x is equal to atmospheric so this side both plus and minus will be cancelled so that is why from this particular point okay I can jump to this point plus minus गला तड़क आसला बेलू प्रेशर इज इंक्रीजिंग ऊपर गला बेलू प्रेशर डिक्रीज होची दैट इज आई एम टेकिंग माइनस ठीक है सो से बोले स्ट्रेट जदि दीपट लिम्ब रे सेम हाइट रे सेम फ्लूइड रोची ओके देन डायरेक्टली आई कैन जंप फ्रॉम वन पॉइंट अनदर एंड दिस इज कॉल्ड एज जंपिंग जैक मेथड ओके so this is called jumping jack method understood ठीक है so finally what I got PA plus rho W G H1 minus rho into HG into G into X is PTM okay so सब value दिया है तो exam रे you can calculate PA from there ठीक this is how YouTube manometer works similarly differential manometer is used to measure pressure difference ठीक है it's used to measure pressure difference okay between two pipes pressure difference between two pipes okay this is one and this is another pipe तो flow होची I am connecting this YouTube manometer on both sides ठीक अच्छे flow होची so एठी धरंतु pressure is PA and here pressure is PB so P minus PB at the pressure that we measure here ठीक अच्छे कहीं जो साइड प्रेशर एठी अधिक मर्क्यूरी अछि तो जदि PA ग्रेटर देन PB ऑटो मर्क्यूरी जदि PB is greater than PA साइड रो मर्क्यूरी ऊपर उठियो then same equation you use to find out okay but differential manometer
nahi tama syllabus you simply have manometer, so that is why just telling you the calculation darkar nahi. Okay, then coming to hygrometer. Hygrometer is a device that is used to measure the humidity in air. Humidity is the moisture content in air. Okay, so this is used to measure the humidity in air. Barometer, atmospheric pressure, okay, as given in the question. Thermometer, temperature. Okay, thermometer is used to measure temperature. Okay. Next question, the pressure exerted by a liquid column depends on. Similarly, same thing by liquid column. Liquid column means the same jinsa liquid highlight. Okay. The liquid column या ऊपर जो liquid जति रहेगा. Okay, so depends on the height of the liquid column because P is directly proportional to H. Density, just a second. Yes, density of the fluid P is equal to H rho G. Density, yes, correct. Height of the liquid column, correct. Acceleration due to gravity, correct. So all this three. ठीक है, okay. तीनटा factors ऊपर है. We have discussed this already. ठीक है. Next, second, the thrust is defined as. Thrust is always a normal force, okay, acting normally on the surface. ठीक है, so this is the correct answer. जब देखिए this is a rocket, so rocket जदि ऊपर को जीवा, rocket जदि ऊपर जाऊँगी, what will happen? तळु को, तळ surface को force act को, this is called thrust, and a rocket ऊपर को जीवा, ठीक है, force acting normally on a surface is called as thrust. Okay. The relation between pressure, force and area. ठीक है, relation between pressure, force and area. So pressure होची normal force by area. So here force means you have to understand it is the normal force. You have to understand it is normal force. So it is normal force upon unit area. The answer is correct. Okay, cannot be written in any other way. So what is the jodi another jadmu bujhuchi parallax. Okay, hydrostatic parallax. Hydrostatic parallax. So hydrostatic parallax means jodi it liquid rahila gote I am drawing like this, another ए भड़िया आ गोटे एमती. ठीक है, ओके. या भितर लिक्विड रहा देखो ये कंटेनर शेप अलग बट सब जाक लिक्विड से इज एट सेम हाइट. So definitely this point is A, B and C. So pressure at A is pressure at B is pressure at C. But pressure is a normal force by area. Say F is equal to FC. No, I cannot, because force is written as pressure into area. It area sabu jagar alga. Okay, you see here area of A is less than area of B is less than area of C. The second will like what about force at A? Same pressure by force will reduce. So force at A is less than force at B is less than force at C. But pressure at A is equal to pressure at B is equal to pressure at C. ठीक है, this relation is very important. ठीक है, this is called hydrostatic parallax. देखिए पे लागू जे pressure सब अलग आथिबो but it is not different. It is same here. Okay, ठीक है. Next देखो the phenomenon by which pressure in a fluid decreases, okay, as its speed increase is explained by, okay, so pressure in a fluid will decrease as the velocity will increase. It is explained by Bernoulli's principle. ठीक है. Now Bernoulli's principle कौन का है? Bernoulli's principle, okay, so Bernoulli's principle, it states that the total energy of a flowing fluid, okay, of a flowing fluid is constant. Okay, total energy of a flowing fluid is constant. So that means dharantu ye gote mo pipe nei gali like this. Let me here dharantu if I am taking this is pipe,
जे कौन गोटे जनरल केस नौ दिस इज ए पाइप ये गोटे रेफरेन्स है to height is h1 and from here it is h2. This is section 11, this is section 22. So as per Bernoulli's principle, inlet jetik energy, outlet jetik energy, and Bernoulli's principle को explain करे पे we have Bernoulli's equation and that is called classical Bernoulli's equation. कहीं देखो तो actually कौन हुए जब तक fluid flow करीबो 1 ରୁ 2 fluid particles ये जो pipe रो wall संगे वा pipe रो surface संगे contact रसिबे so there will be friction and fluid will start losing energy and that is loss is called as head loss. Okay, head loss of the fluid. Kintu what is happening, the thing is that head loss we are not considering here and bina head loss jodi head consider karuna means inlet energy will be equal to outlet energy. Okay, so that is why we are saying energy at the inlet is equal to energy at outlet. Why we are not considering, just to simplify the calculation. ठीक है से बोली विदाउट कंसीडरिंग द हेड लॉस जब आम जीरो नौ जहाँ इक्वेशन आमको मिले दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल बर्नौलीज इक्वेशन. नाउ हाउ डू वी ऑब्टेन दिस बर्नौलीज इक्वेशन? वी ऑब्टेन बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम बाय इंटीग्रेटिंग ऑयलर्स इक्वेशन. ओके, बाय इंटीग्रेटिंग ऑयलर्स इक्वेशन. ऑयलर्स देखो dp by rho प्लस जी डी जेड प्लस भी डी भी इज इक्वल टू 0. ये केमी आसला यार डेरिवेशन दरकार नहीं, ऑयलर्स इक्वेशन ना तुम सिलेबस रे यू हैव बर्नौलीज इक्वेशन. तो से मुझे इंटीग्रेट करी. ठीक है, इफ आई एम इंटीग्रेटिंग इन ऑन बोथ साइड्स सो डीपी बाय रो फॉर इनकम्प्रेसिबल देखो फॉर लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल सो द डेंसिटी विल बी कांस्टेंट. सो रो बाहर को आसीगला डीपी इंटीग्रेशन सो पी बाय रो प्लस जी कांस्टेंट बाहर को आसीगला डी जेड इंटीग्रेशन जी जेड प्लस भी डी भी भी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन केते होबो कांस्टेंट. ठीक है, सो दिस इज द टोटल एनर्जी व्हिच इज रिमेनिंग और टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड. ओके, एंड टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट. ओके, एज पर बर्नौली इक्वेशन फ्लोइंग फ्लूइड. नाउ यू सी देखो कौन कही द फेनोमेनन बाय व्हिच प्रेशर इन ए फ्लूइड डिक्रीजेस. ठीक है, सो प्रेशर इन ए फ्लूइड डिक्रीज माने प्रेशर एनर्जी कमी गला. जदि टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट रहइबो ताहले इधर जेति प्रेशर कमीची इधर ए दि जण पोटेंशियल जी जेड होची कोन पोटेंशियल एनर्जी, पी बाय रो इज प्रेशर एनर्जी, v स्क्वायर बाय 2 इज काइनेटिक एनर्जी. सो ए दि जण मिसी सेति बढ़िबा दरकार नले जणे सेति बढ़िबा दरकार. किंतु देखंतु जी जेड जेड होची कोन एक्चुअली हाइट, जेड हला हाइट आमे जोडे h1 नै चंदी ये हाइट तो कॉन्स्टेंट. पाइप तो एमती कंटिन्यूअसली पोजीशन चेंज करनी जो हाइट चेंज हो, पाइप एमती ही कांस्टेंट अच्छी. सो हाइट जदि कांस्टेंट देन ये तो चेंज होबनी, देन किए चेंज होबो वेलोसिटी चेंज होबो. सो प्रेशर जति कमिला एठी काइनेटिक एनर्जी सेति ही इंक्रीज होबो. ठीक है, हेले टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. सो ये जो क्वेश्चन पचार छि द फेनोमेनन बाय व्हिच प्रेशर इन ए फ्लूइड डिक्रीजेस एज इट्स स्पीड increases is explained by which principle? It is explained by Bernoulli's principle. ठीक है, I hope this is clear. Pascal's law, now this is Pascal's law. ठीक है, Pascal's law होची कोन आमे पूर्व क्वेश्चन जो देखिले that in an enclosed container ठीक है pressure applied at a point in a liquid distributed undiminishedly in all directions. Archimedes principle is different. Archimedes principle का है देखो जे ये गोटे फ्लूइड या भीतर गोटे बॉडी फुल्ली सबमर्ज हो बा पार्शियली सबमर्ज हो तो जतबेले सबमर्ज होची कोन होची ये लिक्विड डिस्प्लेस करिवो. ठीक है, सो लिक्विड डिस्प्ले ए लिक्विड रे किछ वेट रहिला. सो व्हेन ए बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड ठीक है पार्शियली immersed in a fluid, the buoyancy force acting on the fluid is equal to the weight of the fluid displaced by it. Okay, is equal to weight of the fluid displaced by it. ठीक है, understood. Then coming to Newton's law. So Newton's law of gravitation अच्छे, Newton's laws of motion अच्छी. Okay, ठीक है. So it buoyancy force is equal to rho into volume displaced into g. कहीं कि m into g. So rho into v mass. So जति volume displaced से vd नहीं चाहिए. Okay. So unit of density. Density होची कौन? बहुत पहला भावुथे mass per unit volume, but that is the formula to calculate density. But density actually कौन? Density is the heaviness of an object. Okay. So density is the heaviness of an object. So this can be written as kg per meter cube. Okay, it is written as kg per meter cube.
Next देखते हैं body floats in a liquid when its weight is less than the buoyant force. ये होची law of flotation. जिनसे मन रखते हैं जब density of object is equal to density of liquid ताहले body will be submerged. ठीक है, it will be submerged. Submerged means a condition liquid it रहला water. ठीक है, body surface एमती जमती ice is submerged in water. ठीक है, ice float नहीं कि ice sink हुई नहीं. Okay, जमती here जब the density of object is less than density of liquid body float empty surface ऊपर है body will ठीक है, and if density of liquid density of object greater than density of liquid then body is going to sink. Body will sink like this. ठीक है, understood? Body is going to sink. So a body floats in a liquid when its weight is less than the buoyancy force. ठीक है, the body will float when its weight is less than buoyancy force. ठीक है, कहीं buoyancy force बॉडी को पूरा ठेलिया पे चेष्टा करे. जो डेंसिटी बॉडी रा कम मींस लिक्विड अधिका buoyancy force लगे. केमिति buoyancy force जी कौन रो into volume displaced into g. So from this can I say buoyancy force is directly proportional to density. जहाँ डेंसिटी जदि लिक्विड डेंसिटी अधिका सो लिक्विड विल अप्लाई buoyancy force of the object. ठीक है, weight is equal to the buoyancy force कौन हो body will submerged. Body will be submerged. Density is more than liquid, it is going to sink. Okay, if it's volume zero माने it is going to in that case body floats. जदि volume zero हो जाउची so that means the body will not exist. ठीक है, एक्चुअली 2 डायमेंशनल धरन तो मोटे पेपर नेली पेपर तो फ्लोट करिवो बट पेपर थिकनेस इज वेरी नेग्लिजिबल बट स्टिल इट विल हैव सम वॉल्यूम. ठीक है, सो नॉर्मली वॉल्यूम इज 0. आम पेपर जो सीट पेपर नौ वॉल्यूम को 0 कंसीडर कर बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज इफ इट्स वेट इज लेस देन buoyancy. कहीं दैट मीन्स या अर्थ जब वॉल्यूम 0 दैट मीन्स मुझे गोटे नेली ठीक अच्छे बा गोटे धरन कार्डबोर्ड शीट नेली शीट नहीं वाटर पर देली से फ्लोट कला इट इज करेक्ट. या अर्थ जब गोटे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं कि पानी रे छाड़ देवी कि वाटर ऊपर रखीदेवी इट इज नेवर गोइंग टू फ्लोट बिकॉज इट्स वॉल्यूम इज नॉट 0. ता एक्सप्लेनेशन से हो. सो मोर अप्रोप्रिएट इज व्हाट ता माने गोटे बॉडी जदि किसी वॉल्यूम अच्छी स्टिल इट कैन फ्लोट और नॉट. जमती शिप तो सिंक करूनी. ठीक है, शिप सबमर्ज हो रहा. ठीक है, और एनी ऑब्जेक्ट यू टेक से प्लास्टिक बॉटल हो गला प्लास्टिक बॉटल पानी पर देले फ्लोट करछि तो प्लास्टिक बॉटल रो किसी वॉल्यूम अच्छी ना नहीं. यस, सो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है, बुझ पारे इट्स वॉल्यूम 0 मींस बॉडी वॉल्यूम 0 बट गोटे प्लास्टिक बॉटल तो फ्लोट करछि ना. सो प्लास्टिक बॉटल वॉल्यूम तो 0 नुहे. अंडरस्टूड? ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, Archimedes principle. So Archimedes principle it states that buoyant force on a body immersed in a fluid is equal to the yes we can say weight of the fluid displaced by the fluid. Now we have just discussed that. Then pressure exerted by a fluid increases with okay this we have seen it increases with increase in depth. Okay, ठीक है, increase in decrease in gravity now increase in depth P is directly proportional to h already we have seen. Okay, hydraulic machines work on the principle of it works on the principles of Pascal's law. ठीक है, कहीं हाइड्रोलिक मशीन्स देखु बाय अप्लाइंग लेस फोर्स ऑल्सो वी कैन ऑब्टेन मोर फोर्स. ये है हाइड्रोलिक फ्लूइड आमर एठी मोटे पिस्टन नेली एठी गोटे बड़ पिस्टन नेली. सो यार एरिया A1 यार एरिया A2 तो या पर मु गोटे बड़ मास को रखे. ठीक है, यार एरिया है A2 मास है कैपिटल M. ठीक है, जब मुझे फोर्स अप्लाई करी सो प्रेशर के F1 by A1 and as per Pascal's law same force will be transmitted here and this is equal to P1. So this is F2 by A2. So F2 can be written as A2 by A1 into F1. ठीक है, now since A2 is greater than A1 यदि if A2 is greater than A1 what I can say. ठीक है, F2 will be greater than F1 yes or no. कहीं since A2 by A1 value will be greater than 1. Okay, so answer is Pascal's law here. So set by this is my input force. Okay, so this is my input by applied force and this is my output force. Okay, which of the following is not a fluid? Which of the following is not a fluid? Iron is not a fluid. Fluid रो दीटा definitions
सब इजी डेफिनेशन होची एनीथिंग which can flow means liquids and gases. Okay, liquids and gases. ठीक है, they can flow. So example है गला gas under air, liquid under water. But iron is a solid. Our definition होची fluid रा कौन? ठीक है, that continuous deformation. Okay, continuous deformation must occur. Okay, when shear stress acts on the surface. ठीक है, shear stress रा काम होचे सब बड़े deformation आनिबा पई. Okay, so like this जहाँ भी फोर्स लगेली कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हे चलला. ठीक है, सो नेक्स्ट देखो रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ. So relative density होची कौन? It is always the density of a substance to that of density of water. So the relative density is called as specific gravity. It is a ratio. ठीक है, यार this is unitless. So the buoyant force acting on an object in water acts in. Buoyant force हमें केमी देखिला कोले act करथिला. It will act perpendicular, vertical direction. ठीक है, so it will act upward direction. Next, the pressure exerted by a liquid at the bottom of a container is independent of. Okay, pressure exerted by a liquid at the bottom of a container is independent of. Is independent of density पर depend, height, gravity, P is equal to H rho G. So shape of the container पर depend करेनी. Understood? 19 देखो तो when a solid is completely immersed in liquid, the apparent loss in weight is equal to. The apparent loss in weight is equal to weight of the liquid displaced. ठीक है, जति की वेट लॉस करती से बायंसी फोर्स. ओके, बॉडी आसला समर्स है लिक्विड डिस्प्लेस कला. सो ये यार जदि mg से बायंसी फोर्स. सो दिस ए वेट होची कोन जति बॉडी पानी भीतर लूज करला. ओके, बॉडी जदि 60 न्यूटन 5 न्यूटन लॉस करिगला भीतर, दैट 5 न्यूटन इज द बायंसी फोर्स. सो व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड न्यूटन पर मीटर. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर ये है न्यूटन, दिस इज जूल्स, दिस इज केजी पर मीटर क्यूब. ओके, ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. जहाँ भी हम डिस्कस कर ले डेफिनेटली यू विल गेट 1 or 2 questions from this. Okay, so we'll continue next class. Thank you.